100 gram of propane is completely reacted with 1000 gram of oxygen. The mole fraction of carbon dioxide in the resulting mixture is x into 10 to the power minus 2. The value of x is, सबसे पहले तो molecular weight of propane फाइंड आउट कर लेंगे. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोपेन है 44. कैसे आया? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 3 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 8. सो 3 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 1, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोपेन आ गया 44. मोल्स ऑफ प्रोपेन होगा वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. वेट गिवन है क्वेश्चन में 100 ग्राम. सो 100 डिवाइडेड बाय 44 एंड दिस इज इक्वल टू 2.27 मोल. मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा वेट ऑफ ऑक्सीजन गिवन है क्वेश्चन में 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन जो कि है 32 ग्राम पर मोल. सो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गया 31.25. अब बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेंगे फॉर द रिएक्शन ऑफ प्रोपेन विद ऑक्सीजन. तो ये है बैलेंस्ड इक्वेशन. फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन वी कैन सी दैट 1 मोल ऑफ प्रोपेन रिएक्ट्स विद 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर. अब जो मोल्स ऑफ प्रोपेन प्रेजेंट है वो है 2.27 मोल्स. Now in this reaction, first of all we will find out the limiting reagent. Initially 2.27 moles of propane and 31.25 moles of oxygen is present. To find the limiting reagent, moles of propane will be divided by its stoichiometric coefficient. तो balanced equation में stoichiometric coefficient of propane है 1 and moles of oxygen will be divided by stoichiometric coefficient of oxygen. The stoichiometric coefficient of oxygen is 5, so 31.25 divided by 5. So moles divided by stoichiometric coefficient, the value for propane is 2.27 and the value for oxygen is, that is 31.25 divided by 5 is 6.25. So number of moles divided by stoichiometric coefficient, this value is less for propane in comparison to oxygen. So propane is the limiting reagent. Now 1 mole of propane reacts with 5 moles of oxygen to form 3 moles of carbon dioxide and 4 moles of water. So 2.27 moles of propane will react with 5 into 2.27 moles of oxygen to form 3 into 2.27 moles of carbon dioxide and 4 into 2.27 moles of water. 5 into 2.27 is equal to 11.35. 3 into 2.27 is equal to 6.81 and 4 into 2.27 is equal to 9.08. अब इनिशियली जो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट था वो था 31.25 मोल्स. सो आउट ऑफ 31.25 मोल्स 11.35 मोल्स हैज रिएक्टेड. सो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट इज इक्वल टू 31.25 minus 11.35 which is equal to 19.9 moles. अब at the end of the reaction, total number of moles present is, propane तो पूरा utilize हो गया reaction में. Now moles of oxygen left is 19.9, moles of carbon dioxide formed is 6.81 and moles of water formed is 9.08. So total moles is equal to 35.79 moles. So mole fraction of carbon dioxide is equal to moles of carbon dioxide divided by total moles and this is equal to 0.1902. And it can also be written as 19.02 into 10 to the power minus 2. So the value of x is 19.